we are providing the good things to the customer, definitely banks are going to pay us, or sometimes the customer is going to pay True. us. Okay, it is a true, actually, I can say. Okay, so basically, who is eligible to apply for mortgage? Anyone? No. Or it's a No, 40,000 is depend on the customer profile, as I mentioned, because why 40,000 necessarily needed for the self-employed or the non-residents. Okay. But if you are the salaried, then 10,000 dirham salary is much enough to get the mortgage. Okay, you should have the UAE documents like UAE visa or anything. No, if you are the out of the country, as called the non-residents, okay, bank consider okay country के documents here up to 60% or 65%, up to 65%. No, you will get the mortgage on your property value. Things in the mortgage, actually, who want, who are suffering, like, to buy the property, like, just normal people, or, like salaried people. Definitely, we are going to merge them with the banks, and we are going to assist them to get the best mortgage, good mortgage from the different banks. If you're buying the property either in the freehold, either in the leasehold, okay, great. okay, as per the Dubai Land Department, as per the government, they're giving a chance. Okay, there are the terms and conditions. There's a tenure. Bank will pay you. It's not only for the 4 year, 5 years. Up to 25 years, bank can finance you. Property पे mortgage ले सकती हूँ, more than one पे I can. Up to 4 to 5 properties you can Great. take the mortgage. Hello everyone, so this is Kiran from GBH Media Production House, and today we have a mortgage person, Shabib Shiraz from Better Way Mortgage Broker. So let's welcome him. Hello sir, how are you? I am good, thank you very much. How are you? I'm good. So sir, क्या जर्नी है ये mortgage के पीछे? See, basically, you can say, like, I do have the experience in the mortgage since the last 15 years, but I Okay. do started my business since last 8 years. Okay, I got a potential things in the mortgage, actually, who want, who are suffering, like, to buy the property, like, just normal people, or, like salaried people. Definitely, we are going to merge them with the banks, and we are going to assist them to get the best mortgage, good mortgage from the different banks. And usually, I do have type. My company is type directly with the all banks here in the UAE. And as per the customer profile, we are looking the profile like salaried, self-employed, whatever the customer profile. Okay, we are going to assist them like 2-3 banks initially pre-approval without any charge. Customer is happy with us. There is a lot of customers, alhamdulillah. Okay. So why did you choose mortgage as your business? Why not anything else? Why I choose? That's good questions. Yeah. Actually, basically, my background from the financing, like from the banking. Great. Okay, and I thought, okay, this is a good platform. Like, this is a right direction where I'm going throughout, because this is the in between of the bank and the customer. If you're doing something, okay, and we are providing the good things to the customer, definitely banks are going to pay us, or sometimes the customer is going to pay True. us. Okay, and it is a true, actually, I can say. Okay, so basically, who is eligible to apply for mortgage? Anyone? No. Or it's a basic requirement for that? No, definitely. If you go to any category, there are a lot of requirements out there Okay. about the mortgage as well. Can you describe? Mortgage, I can say, like, who's earning more than 10,000 dirham. Okay, he's eligible for the mortgage if he's buying the property. Just 10,000 dirham. Just 10,000 So he is dirham, eligible. yeah, he's for eligible, That. That's yes. great. Yeah, that's a good, and especially in the UAE, okay, like in the banks, they are providing the starting from the 10,000 dirham salary. Who's getting the 10,000 dirham salary? Definitely, he's eligible for that. Great. Okay, but depends on the customer profile. Okay, depends on But the I customer. heard that 40,000 more and above who is eligible for the mortgage. No, 40,000 is depend on the customer profile, as I mentioned, because why 40,000 necessarily needed for the self-employed or the non-residents. Okay. But if you are the salaried, then 10,000 dirham salary is much enough to get the mortgage. Okay, this is very easy in person. Yes, it's a very easy. They are. If I am earning 10,000, so I can buy a property in UAE. Of course, you can buy a profit and buy the congratulations. Yeah. Okay. So, is it possible to get mortgage outside the country, और ये requirement है कि आपको country में होना जरूरी है? नहीं, ये भी जरूरी नहीं. जरूरी नहीं है. Very nice. Yeah, this is not a necessary that you should have the UAE documents like UAE visa or anything. No, if you are the out of the country, it's called the non-residents. Okay, bank consider okay country के documents here up to 60% or 65%, up to 65%. You will get the mortgage on your property value, but should be 40,000 dirham average balance in your account every month. Ah,
Bank is going to check your last 6 Every months, month. every month, last 6 months bank statement. Okay? So we do have the systems. If you send me like you want to apply, you're not here in the UAE, just came on the tourist visa, but you want to buy the property. If I'm on a tourist visa, I can buy a property. Yes, If I am in Pakistan, I am in India, I am in UK, I can buy property in UAE anywhere. just with the 6 months of statement of more than 40,000 rupees. Yes, more than 40,000 if you For have to every say. month, or just I Every have to month, show every month. before and No. it's okay. Every month, recently 16, last 6 months, if you have the 40,000 dirham, definitely you are eligible. Example, if you are buying the property of, for example, 1 million dirham, and if you have the 40,000 dirham every month, so definitely bank will finance you up to 600. Okay. And the remaining 40%, 400,000, you have to pay by yourself. And here bank will not ask you your UAE visa or Emirates ID or any documents from the UAE because you are on the tourist visa. Okay. So जो आपके documents आपके country के है provide कर लो, ठीक है? और initially we are not going to ask the customer the full documents. If you provide us your last 6 months bank statement, so we are going to calculate your average balance. Then after we are advised, we assist to okay, ma'am, you are eligible or not. Or not. Because we don't want to waste your time, we don't want to waste our time. Is it? ओके एक और चीज़ बहुत मॉर्गेज में चलती है और आई थिंक मेरे पास भी यही मिसकंसेप्शन था कि सिर्फ और सिर्फ यूएई में वो बंदा प्रॉपर्टी ले सकता है मॉर्गेज के थ्रू जो कि इमराती है. सो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? मैंने बहुत लोगों से सुना है कि नो, इफ़ यू आर इंडियन और यू हैव अनदर नेशनैलिटी, सो यू कैन नॉट बाय अ प्रॉपर्टी विद मॉर्गेज. You can buy a property with a direct payment or anything, but you cannot buy a property until and unless you are a Emirati. No, that's good, and thanks to the UAE government as well. Okay, they are giving a chance for the expat as well. Yeah. Yeah, the expat कोई भी हो, कहाँ से भी हो. Where are you from? If you're buying the property either in the freehold, either in the leasehold. Okay, great. Okay, as per the Dubai Land Department, as per the government, they're giving a chance. Like you can buy in the freehold or you can buy in the leasehold. Okay, they are the terms and conditions. So Okay, what we are have the to types follow. of mortgage available in UAE? See, there is a types of mortgage like residential mortgage. Okay, commercial mortgage. Okay, land purchase mortgage, construction mortgage, Okay. and the project mortgage as well. Okay, there's a lot of times, but we are just especially doing the residence mortgage, commercial mortgage, non-residence Can you mortgage. describe a bit? If someone is watching the Yeah, video, yeah, so okay. they can get an idea completely that what is mortgage and what is commercial and what is residence. Okay. See, the residential mortgage, like if you have UAE documents like UAE visa, that's called, and your expat, that's called a residential mortgage. Non-residence mortgage, like if you're just only on the tourist visa, you're not generating income from the UAE. Okay, it means you don't have any visa, nothing is there. You're not salaried in the UAE. You are in your country, XYZ country, like you are from the UK, Canada, India, Pakistan, wherever from. Okay, bank, you can buy the property. If you want to go with the mortgage, okay, you will go with the mortgage up to 60% on your property, only 50 to 60% depend on your profile. Right. The bank will ask you just only your documents from your country. Okay, so what is the current trend in UAE property market? Allah is a very good trend. Yeah, it's very good. Seriously. right? Yeah. This is a golden plate. No, I can just say this is a golden plate if someone buying the Golden property. plate. Yes. Okay. You'll have in your hand if you're buying the property, it's a golden plate you have because we don't know in future also it is very grow up. It's a growing market. और दुबई It's a मार्केट very- वैसे ही बहुत बूम कर रही है. बहुत- पिछला 5 बहुत साल boom कर का रहे हैं. निकाल के आज So, देखें as- तो हमने बहुत ग्रो किया है. Bilkul, especially thanks to means like your government, Of course. because A big thank to UAE. yes, of government. course, because they are giving the good chance to buy the property and they are giving a chance to generate your income more than the other things. And of course, in the real estate market, is going very well. What are the key benefit of working with a mortgage in real estate? See, key benefit I can say you will secure your money, like the hard cash money, first thing. And other things like if you are not eligible to pay the 100% cash, of course there is a 99% I can say though they don't have the money 100% cash to pay upfront to the developer, to the any seller. So bank is going to help you out to pay up to 80-85% on depend on your profile. If you are eligible, then Why bank is going to pay on behalf of you. Okay, there's a tenure. Bank will pay you. It's not only for the 4 year, 5 years tenure. Up to 25 years, bank can
finance you Okay, great. up to 25. There's a cap. 25 years. Yes, up to 25 years. And there's the other option is there. Example, if you are going for the 25 years, but in between of that, if you are getting some cash in your hand, and if you want to make a partial payment as well, definitely you can make a partial Or payment. you can do that Yeah, also. there's a very much flexibility in the mortgage bank side. Every banks, not only one bank, very much flexibility. Like you can make a partial payment So as it's well. just 25 years, or if I want to, just exceed that for 30 years or No. 25 years, I can do it or not? No, you cannot do it because as per the here law, the central bank law, or as per the okay. law, is a 25 years is a cap. Okay, but depend on your age as well. Like here the cap is for the salary 65 years age. Okay, till the 65 years, bank will calculate your tenure. Okay, suppose your age is 50, then you are eligible for the 15 years only. Okay. Your age is less than 40, you are eligible for the 25 years. For salaried, 65 cap, and for self-employed, 70 years cap. Okay. Okay, and for the Emirati, 70. Yes. Yeah. So how many percentage I can get, like for 20% or 40% or 60%? कितना mortgage में करवा सकती हूँ? देखो mortgage जो है आप करवा नहीं सकते. एक्चुअली आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जो हाँ, I प्रोफाइल mean my documents, my profile. उसके If my ऊपर ही बैंक profile आपको is- फाइनेंस करेंगे. Of course, मैं ठीक है ना? ये बहुत वो वाला क्वेश्चन है जिसको मेरे जैसे लोग जिनको ज्यादा नॉलेज बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल, मॉर्गेज की, बिल्कुल. वो आपसे पूछेगा ठीक है, देखो. कि मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली इफ आई एम अर्निंग, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अर्निंग 15,000 इन यूएई, सो मेरी प्रोफाइल किस हद तक जाके मुझे मॉर्गेज दे सकती है? देखो आपके इसके अंदर जो 2-3 चीजें लाइक बैंक इज गोइंग टू चेक इट आउट योर क्रेडिट रिपोर्ट एज वेल. ओके. Liabilities, either you are earning 15,000 salary or 150,000 salary, but whatever your liabilities are there, because Okay. bank Liability is matters. yes, liabilities very much matter, That is a because very bank is allowing like basic any financial knowledge for- yes, any financial, okay, in the financial department they are going to allow you 50% for your expense and 50% for your all liabilities. ओके. Okay, so आपकी जो भी liabilities है, either credit card, personal loan, auto loan, company loan, whatever your loans are there, okay, whatever the EMI on behalf of that loans, it will be covered in that 50%. ओके. ठीक है. और आप जो न्यू मॉर्गेज लेंगे उसकी भी EMI उस 50% में कवर हो जाएगा. कवर हो जाएगी. होना चाहिए. अगर नहीं है तो बैंक एज पर योर DBR, डेट बर्डन रेशियो, बैंक उसके ऊपर कैलकुलेट करती है कि आप कितने एलिजिबल है. 15,000 सैलरी एग्जांपल, आपके पास 100,000 के आपके पास क्रेडिट कार्ड्स है, एंड यू आर नॉट एलिजिबल मोर देन 300 or 400,000. ओके. ठीक है. अगर आपके पास कोई लाइबिलिटीज नहीं है, देन 15,000 के ऊपर यू विल गेट अप टू 1 million और 1.1. ओके. आपके इसी सवाल से एक सवाल आया है कि जी. एक टाइम पर मैं एक प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज ले सकती हूँ या मोर देन वन पे आई कैन? See, आप कैन अप टू 4 to 5 प्रॉपर्टीज यू कैन टेक ग्रेट. द मॉर्गेज. ओके, बट डिपेंड है कितना आपको कितनी लाइक मैं eligible फर्स्ट हूँ? प्रॉपर्टी के वास्ते एग्जांपल, फर्स्ट प्रॉपर्टी के वास्ते लाइक 80% अप टू 85% विद द DLD, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, एवरीथिंग, या. एंड द रिमेनिंग अदर प्रॉपर्टीज अप टू 60%, 50 to 60%. या. मे भी आपको 50-60% मिल जाएंगी 5 के ऊपर. करेक्ट. ठीक है. मोर देन 5 प्रॉपर्टी इफ यू वांट टू गो बाय द मॉर्गेज, देन मोर देन 5 इट विल गो, बैंक विल कैलकुलेट एज इन अ कमर्शियल मॉर्गेज, ओके. एंड द कमर्शियल रेट्स लिटिल बिट. ओके. सो आई हैव अ वेरी क्विक क्वेश्चन फॉर यू. आप कस्टमर्स को क्या एडवाइस करेंगे जिसको प्रॉपर्टी बाय करना है एज अ मॉर्गेज? सी, बेसिकली कस्टमर को सबसे पहले मैं तो उनको ये बोलूंगा कि भाई मॉर्गेज के थ्रू, इफ यू आर गोइंग विद द मॉर्गेज के थ्रू आप जा रहे हैं, देन इट इज गुड फॉर यू. लाइक यू कैन बाय द मल्टीपल प्रॉपर्टीज ग्रेट. विथ योर हार्ट. भाई मॉर्गेज आपका सेव करता है, जो कैश है आपको सेव करता है, आपको सेव कर अदर प्रॉपर्टीज के लिए. आप कंप्लीटली खाली नहीं हो कंप्लीटली जाते. खाली नहीं हो जाते. ठीक है. फर्स्ट थिंग, कुछ प्लस रहता है. जी, प्लस मंथली यू आर पेइंग लाइक अ पीनट. आपकी जो मंथली EMI आती है मॉर्गेज के थ्रू, आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यू कैन रिकवर बाय द रेंट एज वेल. लाइक सपोज इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी एंड यू वांट टू गिव द प्रॉपर्टी ऑन द रेंट, so definitely, and rent is coming like 10,000 dirham, but mortgage installment will come like 3,500 to 4,000. Okay. Yeah, It's so you can this cover it by the less. rent. Yes, 3,000 to 5,000. 5,000. That's it. Less than of that one. Great. Okay, so I'll advise you, keep with the money with you. If you have the property, go with the mortgage, because you will buy the multiple properties, the mortgage. और उसी जो आपके पास डाउन पेमेंट, जो आपके पास कैश है, आप दूसरी प्रॉपर्टी लो. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट एडवाइस. जिसको प्रॉपर्टी बाय करनी है और जिसके पास इतना मॉर्गेज का नॉलेज नहीं है, आई जी. थिंक ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल
बात है बिल्कुल कि इसमें और एक ये चीज बहुत लोग आपको नहीं समझाते हैं, लाइक बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत कम और रेयर लोग हैं जो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं. बिल्कुल इसमें यू आर आपको वन ऑफ देम. थैंक यू वेरी मच। इसमें और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि मॉर्गेज के अंदर आपको यहाँ पे बैंक ये भी आपको फैसिलिटीज देती है कि अगर आपके पास इन फ्यूचर अगर आपके पास कैश आती है, यू कैन मेक अ पार्शियल पेमेंट। 25 साल के लिए आप मॉर्गेज लिए हो, 3 साल 4 साल में क्लोज कर दो। जस्ट ओनली 1% यू हैव टू पे ऑन योर अर्ली सेटलमेंट। Great. This is a nice ठीक है ना? information. तो ये है कि आप अपने ओनर बन सकते 4-5 प्रॉपर्टीज। Okay, so I want to ask a very good question कि बहुत सारे मॉर्गेज कंपनीज हैं दुबई में, राइट? मतलब हर एरिया में आपको कुछ ना कोई मॉर्गेज कंपनी मिलेगी. सो लोग आपके पास स्पेशली क्यों आए मॉर्गेज कराने के लिए? आप ऐसा क्या अलग दे रहे हो लोगों को जो कोई भी नहीं दे रहा? That's a good question, actually. Miss, see, in every business, if you see, there is a lot of competitors are there, course, right? of Of course, why the people or audience will come to us? The reason behind of that, see, sometimes like we are directly tied with the banks. Okay. So हम लोग का भी एक टारगेट रहता है. हम लोग एक टारगेट अचीव करने के बाद बैंक की तरफ से हम लोग को कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं, कुछ फैसिलिटीज मिलती है. Yeah. ठीक है. हम क्या करते हैं, अगर कस्टमर हमारे पास आते हैं तो वो लाइक डिस्काउंट्स हम लोग अपने कस्टमर्स को देते हैं. अगर कस्टमर डायरेक्टली बैंक के पास भी जाता है या कोई दूसरे ब्रोकर के पास भी जाता है तो उसको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल, प्रोसेसिंग फीस वेवर, वैल्यूएशन फीस वेवर है, ठीक है, या लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जो भी है जहाँ पे कस्टमर की पेमेंट जाती है. ठीक है ना. एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं कि लाइक इफ समवन वांट टू ट्रांसफर द सैलरी, लाइक दैट्स कॉल्ड द STL. ठीक है. तो हम लोग के कंपनी के वास्ते हम लोग के कंपनी के लिए बैंक की तरफ से ऑफर है कि उसकी प्रोसेसिंग फीस वो नील कर देते हैं. ओके. या इफ द कस्टमर इज गोइंग थ्रू द माई पोर्टल. ठीक है. सेकेंड, हम लोग कस्टमर के हैप्पीनेस के लिए, कस्टमर की खुशी के लिए हम लोग उसको 2 से 3 बैंक का प्री अप्रूवल्स देते हैं विदाउट एनी चार्जेस. यस. ओके. वाई कि कस्टमर का अगर प्री अप्रूवल है, इट मीन्स कस्टमर के पास कैश है. वो कैश है. कस्टमर इज गोइंग टू बाय द प्रॉपर्टी विद दिस प्री अप्रूवल, देन सेलर भी उनको डिस्काउंट देता है. अच्छा जी. उनकी एलिजिबिलिटी हम लोग फ्री में चेक करा के देते हैं कस्टमर को. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज उनकी एलिजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं कि ठीक है ये है. दिस इज समथिंग जो हर कोई नहीं देता. जी, हर कोई नहीं देता. दैट्स ट्रू. ये तो मुझे पता है. ठीक है. उसके बाद हम लोग 3 बैंक्स के प्री अप्रूवल के बाद जब कस्टमर is going to finalize the property, after that we are going to compare the 3 banks rates, EMI, discounts, facilities, whatever is are there, we are going to discuss with the customer. Okay, देखो sir, this banks giving me this EMI, this facilities, this discount. 3 banks का comparison हम लोग देते हैं. Okay. 3 banks का comparison होने के बाद, ठीक है, हम लोग उसको एडवाइस करते हैं कि सर just you think and I'll advise you to go with this bank. This is good for. ठीक है. जैसा कि आप भी देखेंगे कि मॉर्गेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आईबोर आता है, एमरेट्स इंटरनल बैंक ऑफर रेट्स. ओके. वो फ्लेक्सिबल रहता है. कभी सेम लाइक ऑफ फॉरेक्स गोल्ड रेट्स आते हैं, वो फ्लेक्सिबल रहता है. ठीक है. होता है. तो हम क्या करते हैं कि कस्टमर को पूरा कंप्लीटली एक नॉलेज देते हैं कि सर आप अगर चाहे 3 साल के लिए फिक्स ले रहे हैं, बट अपने जो टेन्योर, अपने जो लोन अमाउंट है बैंक आपसे डिडक्ट करेंगे 25 साल के लिए. ठीक है. तो आपका 3 साल के अंदर ये डिडक्ट होंगे, 3 साल के बाद क्या डिडक्शन आपकी है, क्या रेट्स है, ये सब पूरा कंप्लीटली हम लोग स्पेशली हम लोग का अलग प्रोसेस है जो आप दे रहे हैं. बेटर वे मॉर्गेज, मेरे कंपनी बेटर वे मॉर्गेज के साथ एक स्पेशली एक है कि हर एक कस्टमर को डेडिकेटेड 1 मैनेजर मिलता, एडवाइजर मिलता. सबको अलग अलग मैनेजर मिलता बिल्कुल अलग अलग मैनेजर मिस लाइक 10 कस्टमर 20 कस्टमर को एक मंथ के अंदर मेरे पास एक एडवाइस स्पेशली वेल नोन वेल एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स है मैंने रखा स्पेशली कस्टमर्स के लिए, खाली कि वो लोग एडवाइस करते हैं कस्टमर. आप तो बहुत ज्यादा सोचते हैं अपने कस्टमर्स के बारे में. ऑफ कोर्स, बिकॉज़ दे आर द ब्रेड एंड बटर फॉर अस. यस. Yes. That is true. Customers are bread and butter for us. ये सब सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है कि आपको बेटर वे मॉर्गेज ब्रोकर्स पर ही आना चाहिए. थैंक यू. क्योंकि ये बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं जो आई गेस हर कोई नहीं देता. So thank you so much. हाँ. इंशाल्लाह. Can you tell me without telling that you are a broker, mortgage broker? See, suppose like your question is like I am not a mortgage broker, but I want to advise to my friend or to anyone. Yeah. Yes, I can advise like like go with the mortgage. As I mentioned, as I told you before, go with the mortgage, save your money, purchase 2-3 property. ये बार बार मैंने एडवाइस ली है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बट वो नहीं कर पा रहे फॉर सम रीजन. सो या दिस इज द बेस्ट एडवाइस आई थिंक कि जिसको मॉर्गेज के बारे में नहीं पता लाइक मी,
सो मिस्टर शबीब ने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी है और मैं चाहूँगी कि आप लोग इनसे जाके मॉर्गेज कराएं और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ परचेज करें विद दिस. Thank you very much. Thank you Thank so you very much, sir, much. for giving me time, You're and most welcome. such knowledge. Thank you, thanks for our So time. I will meet you I hope. again very soon, maybe Inshallah. for mortgage. Inshallah. Maybe to buy a property. I hope I just do mortgage for you. Inshallah. Thank you so much.